regularly वापस. So basically now you will be regular. Yes sir, वो actually previous सारे cover कर लेना. बहुत बढ़िया, ठीक है. Okay अभिनय. So I guess we have not started Guptas. We have not started Guptas, na? Have we? We have started. Jani Singh started. Kanchi no, and Dami no just began. I guess we have talked about feudalism. Yes, we were talking about feudalism. So feudalism, मेरे हिसाब से भी सबको clarity है. What is feudalism? Everyone is well aware about feudalism now. Okay, great. Give me a minute, please. Okay. तो आज हम शुरू करते हैं the Gupta age, the Gupta empire. This empire, the Guptas, it is also called as golden period, golden age. इसको golden age और golden period भी बोलते हैं. So there are so many people who consider कि everything like it was a golden because हम इसको बोलते हैं golden age. So that means like everything was fit and fine during this age. Everything was fit and fine during this age. सब चीजें बहुत बढ़िया थी, है ना? तो जब पूरा हम गुप्तास कर लेंगे, make an assessment in your mind, try to assess how we can say the Gupta period was the golden age of India or golden period of India. In what context? Basically it is a context. Everything cannot be fit and fine. Society जैसे आप देखोगे, it was not fit and fine. Golden age से बहुत बहुत दूर थे. But yes, in the field of science and tech, in the field of literature, in the field of astronomy. So these were certain areas because of which we can say it was a golden age. So Guptas आ कहाँ से गए? एकदम सडनली कहीं से, मतलब कहीं से ऊपर से आके किसी ने लाइक पैराशूट से गिरा दिया ऊपर से. From where these Guptas have come? What happened when Mauryas जब रूल कर रहे थे? We have seen like who were the successors of Mauryas. There were certain foreign successors. As well as there were certain native successors. कुछ foreign थे, कुछ natives थे. Natives north में अलग थे और south Deccan में अलग थे. There were some natives in the north as well as there were some natives in the Deccan. कुछ natives इनके Deccan में भी थे. ऐसे तो था, ऐसे ही था. Remember? है ना? Remember? So foreign में we know Indo-Greeks थे, Shakas थे, and Parthians or Pahlwas, and then Kushans. Parthians and or Pahlwas and Kushans, or natives Shungas, Kanvas and Satvanas. So they were the successors of Mauryas. Different areas, different periods, they were the successors of Mauryas. ये सब के सब लोग थे successors. ठीक है, ये सारे लोग successors थे. Now what happened? ऐसा बोला जाता है कि these people, Guptas, ये जो गुप्तास थे, they were of Vaishya origin. ये वैश्य origin के लोग थे. And आए कहाँ से? From where these people came? What happened? अब हुआ क्या? When these people were ruling, क्या नाम था? Kushans and Satvanas. Kushans in the north, Satvanas in the Deccan. Kushans and Satvanas, when these people were ruling, so Kushan rule ended near about 230-235 AD. Kushan rule ended. When Kushan rule ended, they were like Kushan का जो area था, वो किसने लिया? There were some people who are called as Murundas. तो direct Guptas नहीं है, अभी देखना आप, ठीक है? So they were called as Murundas. So Murundas, probably, possibly, these were the people like who came after these Kushans. लेकिन Murundas का जो period था, that is very short-lived, very short-lived, hardly 2 decades, only 2 decades, not centuries, decades. तो बहुत history में तो बहुत छोटा सा rule हो जाएगा. If the rule is of only decades का अगर rule होगा, तो हमारे पास history भी नहीं होगी. We don't have history of these people. During the same period, Kushans के ही like under में there were some people who were living इस area में, middle and lower middle Gangetic plains में, there were some people who were living who were called as Guptas.
who were called as Guptas. ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, ठीक है. Then there was a person, what was the name? Shri Gupta. The name was Shri Gupta. Chaitra with the capital, बाद में capital उन्होंने पाटलिपुत्र बनाया, capital पाटलिपुत्र बनाया, middle and lower Gangetic plains. Okay, Chaitra. So these people, like this man Shri Gupta, he founded a dynasty. अपने आप को इसने बोला कि now I am a free man, and he founded a dynasty. तो क्या नाम था? Shri Gupta. So Shri Gupta was the person like who established its control over some regions. अभी केवल some बोला है मैंने, over some regions अपना independent control लेकर आ गया. कौन? The name of the person was Shri Gupta. ठीक है. Now धीरे धीरे the successors of Shri Gupta, they started increasing their control. And the dominions of Satavahanas तक, जो Satavahanas का area था, that will also be overtaken later on. वो सारा area वो Guptas ले लेंगे. And these people, Guptas, so called as Guptas, they also, जैसे Mauryas है ना, Mauryas ने क्या किया था? Mauryas had united India politically. After Mauryas, it is Guptas who have like united India politically. इन्होंने इंडिया को politically unite करके इकट्ठा करके रखा इन्होंने काफी लंबे टाइम तक. Now again, like अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि ये लोग कर क्या रहे थे, हो सकता है ना sometimes of these, कभी छोटे क्वेश्चन आते हैं which will not be asked in the examination but are very important to like important for our understanding. Then we want to ask anything? So these people, okay Janvi, these people were feudatories of Kushans. Actual में ये लोग थे कुशान्स के feudatory. They were feudatories of Kushans. इसका क्या मतलब है? They were feudatories of Kushans. इसका क्या मतलब है? What does this sentence mean? Feudatory of Kushans. Yes, tell me. Sabna, tell me. Feudatories of Kushans. That means इनके पास में एक लैंड होगी and उस लैंड में से जो इनको रेवेन्यू आ रहा होगा, they must be giving the tributes to Kushans. है ना? ट्रिब्यूट कुशान्स को दे रहे थे. तो जो इनका मैंने बोला एरिया कौन सा था? मिडिल एंड लोअर गैंजेटिक प्लेन्स. तो स्टार्टिंग में इनका जो एरिया था वो था ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड मॉडर्न डे बिहार. ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटली, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड मॉडर्न डे बिहार. और इनकी सीट ऑफ पावर थी प्रयाग. You know which city is called as Prayag now? Which city is called as Prayag? Allahabad. So what is the new name of Allahabad? Prayagraj. If I say we have many Prayags in Himachal Pradesh, or we have many Prayags in Uttarakhand, the sentence will be true or false? We have many Prayags in Himachal Pradesh or in Uttarakhand. The sentence will be true or false? कांची सिंह ट्रू. कैसे कांची? इतने सारे प्रयाग नाम की जगह है हमारे पास. What Prayag means, Kanchi? Yes, Sir, Kanchi. Yes, sir, Kanchi. I read in one book that there are, I guess, 5 Prayags. Prayag means like that ritual place, like ritualistic place. Oh, Prayag means ये किसने बताया था? ये भी पढ़ा था? I don't remember means exactly, but yeah.
Prayag means where two rivers meet. This place where the place where two rivers meet is called as Prayag. तो अलाहाबाद को प्रयाग क्यों बोलते हैं? Why Allahabad is called as Prayag? Because it is a confluence of which two rivers? Ganga and Yamuna. है ना? तो उल्टा कर देना, गंगा इस वाली ये होना चाहिए था और यमुना ये होना चाहिए था अगर मैं मैप के तौर पर बनाता तो. ठीक है, इधर गंगा होगी और इधर से यमुना आएगी. So this place is called as Prayag. When this Ganga is coming, there are two rivers, Bhagirathi and Alaknanda. The rivers are Bhagirathi and Alaknanda. These two rivers meet at which place? Bhagirathi and Alaknanda दोनों कहाँ मिलते हैं? हाँ जी बताइए. Bhagirathi and Alaknanda. Anyone aware? No one. हरिद्वार. सबना सही में ये कहाँ पे पढ़ा था आपने? सबना ये कहाँ पढ़ा था? हरिद्वार. ओ माय गॉड. तो ये तो क्या बोलते हैं, आपकी एक 11th क्लास की एनसीईआरटी है. वन ऑफ द वेरी फाइन एनसीईआरटी. 11th क्लास की फाइन एनसीईआरटी है. ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्लास 11th एनसीईआरटी. उसमें बहुत अच्छा चैप्टर दिया हुआ है ये. तो इन दैट चैप्टर आपको पता चलेगा कि two rivers, one is Gangotri, one is Alaknanda. Both these two rivers meet at a place. दोनों के दोनों एक जगह पे मिलते हैं. That place is called as Dev Prayag. This is Dev Prayag. ठीक है. This is Gangotri. This is Alaknanda. गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? What is the origin of river Ganga? From where river Ganga originates? Which glacier? Yes, Gangotri. कितना सिंपल है. It's so simple. Gangotri कितना सिंपल है ना? It's so simple. Gangotri. Now tell me, Gangotri is origin of भागीरथी और अलकनंदा. क्योंकि गंगा तो इसके बाद यहां से गंगा है ना. इसके बाद it becomes Ganga. Before this it is Bhagirathi and Alaknanda. So basically river Gangotri is the source of Bhagirathi or Alaknanda? It is Bhagirathi. No Janvi, it is Bhagirathi. Alaknanda originates from another glacier. It is called as Shatopant Glacier. It is called as a Shatopant Glacier. ठीक है, शतोपंत ग्लेशियर बोलते हैं. एंड दिस रिवर अलकनंदा रिवर की भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं. वन ट्रिब्यूटरी इज धौली गंगा. इट मीट्स अलकनंदा एट अ प्लेस कॉल्ड एज विष्णु प्रयाग. कहाँ पे मिलती है? विष्णु प्रयाग में. River Pindar. This is River Pindar. River Pindar meets at Karnaprayag. ठीक है, PK. River Pindar meets at Karnaprayag. River मंदाकिनी. एक मूवी भी आई थी मंदाकिनी नहीं, राम तेरी गंगा मैली. जैसे मंदाकिनी थी, very famous movie. राम तेरी गंगा मैली. There was an actress Mandakini, very famous movie. So there is a river Mandakini, and river Mandakini meets river अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग. जानवी, इस बात तो बिल्कुल एकदम आपने चौका मारा. एकदम परफेक्ट आंसर है इस बार. ठीक है, ओके. सो सारे प्रयाग पता चल गए आपको. वन वाज देवप्रयाग गंगा एंड देवप्रयाग भागीरथी एंड अलकनंदा. रुद्रप्रयाग पे कौन मिलता है? रुद्रप्रयाग पे आती है मंदाकिनी. पी के साथ के है यानी पिंडर मिलती है कर्णप्रयाग. एंड कौन सी बताई थी मैंने? और धौली गंगा मीट्स एट विष्णु प्रयाग.
प्लीज रिमेंबर दीज ऑल प्रयाग्स. यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है यहाँ से, और बाकी एग्जाम के तो मतलब फेमस ये उनकी उनकी बहुत आदत है यहाँ से क्वेश्चन पूछने की. ओके ठीक है, गॉट दिस पॉइंट. आई होप आपने ये लाइक जॉट डाउन कर लिया होगा. यस जानवी, ऑल प्लेसेस उत्तराखंड, सब इंग्लैंड में है. चलो चलते हैं आगे. सो व्हाट आई वाज सेइंग, Guptas, they were the feudatories of Kushans. ठीक है, Kushan originally they were the feudatories of Kushans. Now, according to धर्मशास्त्र, जो धर्मशास्त्र थे, धर्मशास्त्र ने कुछ टाइटल्स मेंशन किए हैं. There are certain titles which have been mentioned in धर्मशास्त्र. So the titles are number 1, Sharman. Number 2, Varman. Number 3, Gupta. And number 4, Das. These are some titles, and if you have realized, we all at present, in present scenario, we all have these 4 titles. This is Sharma, this is Varma, this is Gupta, and this is Das. Shashikanta Das. If you know who is he, Shashikanta Das. पता है कौन है शशिकांता दास? कोई शशिकांता दास? क्या बात है जानवी, आरबीआई गवर्नर. तो आरबीआई गवर्नर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी शशिकांता दास को. He was one person, one senior officer in Ministry of Finance when demonetization was like launched, है ना. So he was one of the huge supporter of demonetization. बाकी सब लोग उसके खिलाफ थे, including the then RBI governor. What was his name? What was his name? Earlier governor, Urjit Patel. Thank you, Damini. Urjit Patel was also not very fine with the idea. He was the person. बोला था कुछ भी हो जाए बहुत बढ़िया है साहब, बहुत बढ़िया है. तो इनको इनाम भी मिला फिर. So Sharman, Varman, Gupta and Das. तो Sharman इसका मतलब होता है auspicious. Sharman, ये किस, who are the people who are using this title? The Brahmanas. Varman का मतलब होता है armory. And who was using this title? Kshatriyas. Guptas, तो गुप्त एक मूवी भी आई थी ना, गुप्त, मेरे ख्याल से काजोल स्टार. तो गुप्त मतलब हिडन. So many people are having अच्छी सी वेल्थ होती है ना गुप्तास के पास में. तो हम स्कूल डेज में ऐसे लाइक बोलते थे ना, इफ सम ऑफ आवर फ्रेंड वाज अ गुप्ता. मेरा फ्रेंड था गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, इन आर्मी स्कूल, while doing 11th and 12th in army school. तो one of my friend was Gupta. मैं उसको बहुत बोलता था ये बात. So hidden, और it also means protected, and this title was used by Vaishyas. Das, so it's well understood. Das मतलब servant. And Shudras were using this title. Okay, so if anyone asks, the original kingdom of Guptas will be found in present day which states? So can you see this area? Light bluish or cyno green? है ना? Can you see this area? सबना, it was according to धर्मशास्त्र. जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र के हिसाब से. ये सभी ने बताओ. Was this like a new Varna system under the Gupta Empire, or like the Gupta age? नहीं, कोई कुछ नहीं है. In fact, there were some people who did not like कि अरे गुप्ता वर्ण नंबर 3 and you are ruling. ऐसे कैसे कर लिया? तो इन्हें कुछ करना पड़ा उसके लिए. बताऊंगा अभी, जस्ट थोड़ी देर रुको कि उन्होंने क्या किया. चलो अभी बता देता हूँ. So जो Shrigupt was the first person. Shrigupt founded this dynasty. Shrigupt was succeeded by Ghatotkacha, and the son of Ghatotkacha was Chandragupta I. C1. Chandragupta I. This man, when he came to power in 319 AD, तो अब इसको बार-बार सुनना पड़ रहा था ये.
है ना। तो क्या किया चंद्रगुप्त ने कि ठीक है, आपको लगता है ना कि मैं गुप्ता हूँ, तो अब याद करो एक वो डायलॉग ऑफ गदर मूवी व्हेन सन्नी देओल मैरीज दैट एक्ट्रेस, है ना, वो मांग भरता है उसकी और एक डायलॉग बोलता है, लो अब ये हो गई सिखणी। रिमेंबर इफ यू हैव सीन दैट मूवी, गदर मूवी, है ना। सो ऐसे चंद्रगुप्त वन को भी आइडिया आया कि क्या किया जाए, तो ही मैरिड अ लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी, and this lady Kumara Devi was, मैंने क्या बोला, लिच्छवी प्रिंसेस, and लिच्छवी was a क्षत्रिय kingdom, क्षत्रिय लोग थे, they were Kshatriyas. तो चंद्रगुप्त वन हैड प्रोबेबली, उसने पक्का ऐसा कुछ बोला होगा शादी करने के बाद, लो मैं भी हो गया अब क्षत्रिय, सो आई कैन आल्सो रूल नाउ, मेरी वाइफ क्षत्रिय, तो मैं भी क्षत्रिय हो गया, which added prestige. Actually now, ये मजाक के तौर पे नहीं, seriously, this thing added prestige to Chandragupta I, and now people started accepting him as the ruler. Okay अभिनय, समझिए ये बात। तो ऐसे तो लोगों को परेशानी थी फुलटू वाली परेशानी थी। मौर्यस के टाइम पे तो लाइक क्लैरिटी नहीं थी कुछ भी, है ना। देयर वाज नो क्लैरिटी कि लाइक हु इज दिस मैन चंद्रगुप्त मौर्य, किसी को पता ही नहीं चला हु इज दिस मैन। लाइक बहुत कई बार होता है ना कि पता ही नहीं चल पाता कि अच्छा व्हाट इज द कास्ट ऑफ दिस पर्सन। कई बार होता है हमारे फ्रेंड्स के बीच में, जब तक पता नहीं तब तक अच्छा है, पता होती गड़बड़ी हो जाती है कई बार। Sometimes these things also happen. So this was the thing that happened with Guptas. So the original kingdom of Guptas was Uttar Pradesh and Bihar. What will be the factors? What will be the factors which will boost empire making? यहाँ पर इस region में ऐसा क्या होगा which will help Guptas to make an empire? Yes, tell me. Abhinay, Chaitra, Sindhuja, Damini, Janvi, Kanchi, Mrigank, Sabna and Shubhra. Sabna is saying fertile land. बहुत बढ़िया. Sabna is saying fertile land. Anything else? मान लिया मैंने. बिल्कुल 101% it was fertile land. Yes, Abhinay. So since they were feudatories of Shanas and all, maybe when the previous kings got weakened, they then eventually came into power because of the land that they had owned and they had maintained a sovereignty over there. ठीक है, एकदम सही है. तो इसमें इस एरिया के अंदर ऐसा क्या था? What was there in this area? Yes, Abhinay. What is there in this area? Very good, Mrigank and Shubhra. It was iron. It was iron. Earlier, southern Bihar, present day Jharkhand, southern Bihar और झारखंड है ना, उसके अंदर तो मिनरल्स हैं भाई पूरे, उसके अंदर तो पूरे मिनरल्स हैं. Some of you must be knowing this thing. This division of Bihar into Bihar and Jharkhand, इसमें एक problem है. There's a huge problem in this division, and the problem is now in Bihar there are no minerals. All mineral area gone to Jharkhand. Shubhra was silk trade. Shubhra, that will be the third point. Now this silk trade, it will be boosting. That silk trade, it will be boosting, है ना. अब पीछे से हमें एक बार हमारी गाड़ी शुरुआत हो गई. Like आपने देखा CNG, if you are using CNG, if someone is using CNG, do you know, like if your like CNG tank is full, 100% full, then also CNG is not used to ignite the engines. Do you know this thing? Are you aware of this thing? All the CNG vehicles, जितने CNG vehicles हैं, CNG is not used. जब हम गाड़ी शुरू करते हैं, it is not the CNG that is used. It is the petrol. भले ही आपने CNG पे गाड़ी कर रखी है, still it will be the petrol. Petrol will burn first. पेट्रोल बर्न करेगा, पेट्रोल हो गया, अभी पेट्रोल का काम खत्म, अभी अब ऑटोमेटिकली नाउ CNG भी स्टार्ट हो जाएगी. तो ऐसा ही these were the two areas that will give a boost empire making के लिए. And one thing very important, that is trade. ऊपर से ट्रेड, ये जो ट्रेड रूट जा रहा था, सिल्क रूट that was going, सिल्क रूट जो जा रहा था, तो सिल्क रूट बड़ा नजदीक था, and the offshoots of this silk route was coming into India. The offshoots of this silk route
Silk route or silk trade, it was silk route to Romans offshoot आ रही थी गुप्ता एम्पायर में, ये गुप्ता एम्पायर में आ रही थी. ओके ठीक है, दिस थिंग इज लाइक क्लियर टू ऑल. शुभ्रा क्लियर है? तो three important things. First, fertile land. Second, iron, presence of iron, and number third, silk trade or silk route. तीन चीजें हमें याद रखनी है. Okay, तीन चीजें याद रखनी है. Now, these people were feudatories of Kushans. These people were feudatories of Kushans, and Kushans के बारे में, if I ask you, how Kushan were there in cavalry? कैसे लोग थे cavalry? कैवलरी में मास्टर्स थे क्या? नहीं थे. जानवी ने बोला ग्रेट हॉर्समैन, वो मास्टर्स बहुत बढ़िया थे, परफेक्ट राइडर्स, ग्रेट हॉर्स राइडर्स. एंड इफ समवन इज फ्यूडेटरी ऑफ कुशान्स, डोंट यू थिंक दे विल आल्सो लर्न द सेम क्वालिटी? सेम स्किल इनके पास भी आ जाएंगे. With due course of time, they will inherit the same skill. गुप्तास के पास वो स्किल आ गई. So Guptas were also like very nice riders. They knew the use of saddles, reins. They also used coats, trousers, boots, and this thing, like great cavalry or like great horsemen or excellent horsemanship, it was the basic strength of Guptas. ये इनकी हो गई basic strength. और आई कहां से ये strength इनके पास में? Was this strength natural to them? No, they have learned. है ना, जैसे एक मूवी थी, the name of the movie was Rustam. There was a dialogue, you have earned this cassette. So here, like इन्होंने they have learned this quality. They had learned this quality. Though there will be like some people, some Guptas who will be excellent chariot warriors also. Excellent chariot warriors. Okay. So now the same thing. What are the sources of history? What are the sources of history for the Guptas? हमारे पास Guptas की history के लिए क्या क्या sources हैं? तो क्या क्या sources हो जाएंगे हमारे पास? Now we'll see. We'll be having variety of source. अब हमारे पास होगी variety, sources की variety होगी हमारे पास अब. Why I am saying so that we are having variety of sources? Why I can say this thing? Anyone? कांची large empire. तो कैसी variety के अंदर क्या क्या आएगा? What all things will be there in this variety? ये variety तो ठीक है, but इस variety में क्या? जानवी, literary plus archaeological. So literary plus archaeological plus something else now. Something else, and it is called as epigraphical. Epigraphical means inscriptions. Epigraphical means inscriptions. Okay. इसके अलावा एक और numismatics. क्या क्या बोला मैंने बोला पहला लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल, बाद मैंने बोला एपिग्राफिकल, न्यूमिस्मैटिक्स, epigraphal includes the inscriptions, iron pillar inscriptions. Numismatics includes coins. So many things. इसके अलावा एक और मैं लिटरेरी को या तो बढ़ा सकते हैं. The accounts given by Fayan. So Fayan was a Chinese traveler who came to India during the time of Guptas. और जब India आएगा तो कुछ लिखेगा भी, है ना? ऐसी कोई आएगा, ऐसी तो वापस नहीं जाएगा. So he'll be writing something. So whatever he'll be writing, those things
will be telling us the life and society of the people at that time. सही बात है. तो ये भी हमारे पास अच्छा खासा सोर्स हो जाएगा, अच्छा खासा सोर्स हो जाएगा. When we say literary source, when we say literary source, तो लिटरेरी सोर्स में कई सारी चीजें, लिटरेरी सोर्स में देयर आर मेनी थिंग्स इन द लिटरेरी सोर्स, लाइक पुराण्स नंबर 1. नंबर 2, विशाखा दत्त ने कुछ बुक लिखी. विशाखा दत्त, one was देवी चंद्रगुप्तम, and another was Mudra Rakshasa, Mudra Rakshasam. तो मुद्रा राक्षसम तो आपको पहले ही पता है. What is given in मुद्रा राक्षसम? I hope you remember. You remember मुद्रा राक्षसम? What was the story of मुद्रा राक्षसम? याद है सबको? Importance of मुद्रा राक्षसम. कांची, क्या था मुद्रा राक्षसम का इंपॉर्टेंस? क्या था स्टोरी मुद्रा राक्षसम की? Sir, that Chandragupta Maurya story, that we have to first conquer the periphery of the areas, like frontiers, then the center. बहुत बढ़िया कांची, बहुत बढ़िया. सो एक स्टोरी है देवी चंद्रगुप्तम. देवी चंद्रगुप्तम एक स्टोरी है. ये स्टोरी पे क्या लिखा हुआ है? There was a person called as रामगुप्त. पूरी बॉलीवुड नाम, बॉलीवुड के जैसे मसाला मूवी है रामगुप्त. सीरियसली इसके ऊपर मूवी बन जाएगी तो किसी को लगेगा भी नहीं कि गुप्तास के टाइम की बुक के ऊपर लिखी हुई है. पूरी मसाला स्टोरी. सो रामगुप्त, there was a person called as रामगुप्त. During the time of Ramagupt, like Shakas were ruling. Shakas, एक एरिया में Shakas रूल कर रहे थे. Especially this green area. ये जो green area ना, it was with Shakas at that time. So Shakas were ruling. Shakas attacked Ramagupta. Shakas ने अटैक किया रामगुप्त और रामगुप्त को अटैक करके जब रामगुप्त मारने की बारी आई, रामगुप्त said, please don't kill me, what do you want? Tell me what do you want? जो भी चाहिए बता दो. So the Shakas, they demanded so many things, riches and all. Plus they also demanded wife of Ramagupta. बोला कि तुम्हारी वाइफ भी चाहिए. ठीक है. कांची भी देखो, स्टोरी पूरी हो तो देखते हैं आपको समझ आएगा क्या नहीं. गिव मी सम स्कोप, गिव मी सम minutes. So Ramagupta gave, in addition to the treasures, he also gave the wife to Shakas. Ramagupta was having one younger brother. His name was Chandragupta. So Chandragupta कहीं घूमने गया था दोस्तों के यहाँ पे, है ना, for night out. तो चंद्रगुप्ता कहीं और था, नाइट आउट पे गया हुआ था. When he returns back, so he asked, भाई आज भाभी जान कहाँ है? Like where is भाभी श्री? Not भाभी जान, भाभी श्री, it is like ancient, ना. If it would have been medieval, so it would become भाभी जान. तो अभी भाभी श्री. So भाभी श्री कहाँ है? कि भाभी श्री तो गई. कहाँ गई? कि आपके भैया ने भाभी श्री को दे दिया. किसको दे दिया? शाकास को दे दिया. क्यों दे दिया? शाकास आए थे, मारने आए थे रामगुप्त को, तो भाभी को दे दिया. कि भाभी को दे दिया. अब क्या करे? चंद्रगुप्त आंख बबूला. चंद्रगुप्त वाज लाइक, पागल हो गया चंद्रगुप्त. हाउ डेयर रामगुप्त gave my भाभी to Shakas. How dare he gave my भाभी to Shakas. तो चंद्रगुप्त अटैक्ड शाक. चंद्रगुप्त घुस गए जाके शाकास के किंगडम में with army. First defeated Shakas, took his भाभी को साथ लिया, came to his place, killed Ramagupta, भाभी के साथ विवाह किया, and became the ruler. Chandragupta won. That is the story of Devi Chandraguptam. अब कांची बताओ, पता चल गया रामगुप्त कौन था? जानवी मस्ट सेंड टू करण जौहर. पुराने जमाने की सारी मूवी तो ऐसी होती थी जानवी.
सारी याद करो, सारी की सारी पिक्चरों में ये तो होता था, ऐसा से सब कुछ होता था। हिट नहीं होगी, पुरानी होगी स्टोरी, बट दिस इज द स्टोरी ऑफ देवी चंद्रगुप्त। यस कांची, क्लियर हुआ अभी कौन था रामगुप्त? Sir, Chandragupta one was married to Lichvi princess, ना? चंद्रगुप्त, हाँ तो क्या हो गया, एक ही के साथ शादी कर सकते हैं क्या? ये कहीं लिखा हुआ है? अरे टाइम की बात है, उस टाइम पे लाइक समझा करो कांची। Yes. Okay, but we don't have any other sources to tell. We don't have any other sources to tell that Shri Gupt was succeeded by Ghatotkacha, and Ghatotkacha was succeeded by Ramagupt, and Ramagupta was succeeded by Chandragupta. In everywhere you will find Ghatotkacha was succeeded by Chandragupta. ठीक है, तो कहीं रामगुप्त का जिक्र नहीं है apart from this story, Devi Chandragupta. So this book, entire text is lost. So Janvi, you cannot send it to Karan Johar. You cannot send it to Karan Johar because the book is no more. Book है ही नहीं, भेजोगे कहाँ से? है ना? The entire text is lost. Only some portions is like portions are remaining, and that too in the form of quotations. That too in the form of quotations. ठीक है? ऐसे ही एक पर्शियन स्टोरी भी है, इसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड एक पर्शियन स्टोरी भी, आई टेल यू दैट आल्सो। देयर इज अ पर्शियन स्टोरी, उसका नाम है मजमल उत त्वारिक। मजमल उत त्वारिक, इस टाइप के नाम पूरे मिडीवल में देखने को मिलेंगे आपको। बुक्स के नाम, इस टाइप के बुक्स के नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो थोड़ा सा आपको पहले से हल्का सा इशारा दे रहा हूँ कि मिडीवल में हमें बुक्स के नाम कैसे देखने को मिलेंगे। इट्स समथिंग ऑफ दिस काइंड। So अभी देवी चंद्रगुप्तम के लिए what we need to remember is देवी चंद्रगुप्तम was written by Vishakha Datta, and according to this book, before Chandragupta I, the brother of Chandragupta, he was ruling this place. यहाँ तक क्लियर है सबको? बेसिक्स पूरा बैकग्राउंड सबको क्लियर हो गया? बैकग्राउंड क्लियर? बैकग्राउंड ऑफ गुप्ताज इज क्लियर टू ऑल? गुप्ताज कहां से आ गए, कैसे आ गए? चंद्रगुप्त, बिकॉज चंद्रगुप्त इज कॉल्ड ए रियल फाउंडर, दिस मैन इज कॉल्ड एज रियल फाउंडर। श्रीगुप्त थोड़ा सा एरिया छोटा सा बनाया था। दिस एरिया इज ऑफ चंद्रगुप्त वन, है ना? नहीं तो छोटा सा एरिया था, बिल्कुल छोटा सा एरिया था गुप्तास का। तो ओके, यस कांची। Sir, as we have discussed now that Sri Gupta was the founder of that Gupta dynasty. So he was founded, like when he was founded the Gupta dynasty, at that time Kushans were present. At that time Kushans were present. Kushans present, उसने बोला कि मैं अपने आप को ये डिक्लेयर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है। सो रूलर्स बिफोर चंद्रगुप्त वन, श्रीगुप्त एंड घटोत्कच, दोनों ने एक टाइटल लिया, महाराज। महाराज की जय हो, ये आपने सुना होगा ना कई जगह पे, महाराज की जय हो। सो दिस टाइटल महाराज, इट वाज टेकन बाय श्रीगुप्त एंड घटोत्कच। श्रीगुप्त एंड घटोत्कच, श्रीगुप्त वाज द फाउंडर and Ghatotkacha was the son of Shrigupta. But the real story began after coming of Chandragupta I. Chandragupta I. तो सब ना कुशांस तो तब तक पूरे खत्म हो चुके थे ना, लाइक सक्सेसर्स, सबके सक्सेसर्स तो वीक हैं, है ना? सब ना सक्सेसर तो सभी के वीक हैं, ये तो हमने सबको देखा, हमेशा से देखा है, हमेशा से देखा है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक प्रेजेंट डे कांग्रेस, सीरियसली प्लीज डोंट टेक इट देयर। लेकिन मैं ये बोलूं सक्सेसर सबके वीक है, बाद में जाके सक्सेसर सबके वीक हो जाता है, तो सही बात है ना? ओके, पता चल रहा है आप कांग्रेस के साथ जोड़ दो इसको। ओके, सो चंद्रगुप्ता वन, कैन यू सी दिस कॉइन? कैन यू सी दिस कॉइन? देयर इज वन पर्सन और टू, वन और टू, टू। So Chandragupta I issued coins with Kumara Devi, like Kumara Devi और अपनी दोनों की इमेज होती थी कॉइन के ऊपर। दिस इज कुमारा देवी, लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी। सबको पता होना चाहिए ना भाई ये कौन है। Everyone must know who is she. She is a Kshatriya, like Kshatriya lady, a girl from Kshatriya family, and who is my wife. So everyone must know this thing. कोई क्वेश्चन मार्क ना उठाए मेरे ऊपर, ठीक है? मेरा भी कहीं ना कहीं लिंक्स हैं, जैसे ना दिल्ली में everyone is someone of someone, so something like that. So Chandragupta I, he was the first most important king of Guptas, and he married Lichavi princess. The name was Kumara Devi. He was the son of Ghatotkacha. Now he like क्या बोलते हैं, after this marriage alliance हुआ क्या
he got huge prestige. उसकी प्रेस्टीज में बड़ा इजाफा हुआ, प्रेस्टीज बढ़ गई, रातों रात प्रेस्टीज बढ़ गई. Okay, Mehroli Iron Pillar mentions about the conquests of Chandragupta I. Chandragupta I. Now he issued coins in the joint names of his queen and himself. You can see it here. And now he took the title of Maharaja Dhiraj. Maharaj se kaam nahi chala, so he took the title of Maharaja Dhiraj. Maharaja Dhiraj ka title le liya. He took the title of Maharaja Dhiraj. Okay, Maharaja Dhiraj. Maharaja Dhiraj ka matlab the great king of kings. The great king of kings. The meaning of Maharaja Dhiraj is great king of kings. And he is also called as first great king of Guptas, Gupta Empire. इसलिए इसको बोलते हैं real founder. Real founder. This man is called as real founder. So this man was having a son. एक बेटा था और बेटे का नाम रखा ओशन, मतलब समुद्र, समुद्रगुप्त. Samudragupta. He kept the name Samudragupta. So Samudragupta was the son of this man. Give me a minute, yes. Samudragupta was son of this man. Chandragupta one ka time period, if you ask me, we are not very sure, but you can write 319 AD to 334 AD. 319 से लेके 334 AD तक आप में लिख सकते हैं. Then Samudragupta, he was the person, we can say he was opposite of Ashok. He was just opposite of Ashok. थोड़े दिनों पहले हमने एक बुक देखी थी, एग्जैक्ट एक्सट्रीम ऑपोजिट ऑफ कामा सूत्र. आज हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ अशोक. कैन वी से समुद्रगुप्ता वाज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ अशोक? कैन वी से दिस थिंग? समुद्रगुप्ता वाज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ अशोक. जानवी, कैसे बोल सकते हैं हम ये बात? हाउ वी कैन से दिस? He was in favor of violence and conquests, like he was in favor of that. बिल्कुल, अशोका ने तो बोला था, अशोका हैड रिप्लेस्ड भेरी घोषा विद धम्मघोष. भेरी घोष को धम्मघोष से रिप्लेस कर दिया था. किसने? अशोक ने. समुद्रगुप्त ने वापस से क्या बोला? भेरी घोष. Getting this point? So we can say Samudragupta was exact opposite of Ashoka. Samudragupta was exact opposite of Ashoka. One more thing. You remember Allahabad inscription Prayag Prashasti? Prayag Prashasti, किसने क्लास में ये वर्ड लिया था? Prayag Prashasti. Yes, Janvi. So Prayag Prashasti or Allahabad inscription, on which peace-loving Ashoka's inscription is there. पीस लविंग अशोका का इंस्क्रिप्शन था इसके ऊपर, है ना? पीस लविंग अशोका. On the same pillar there was an inscription of Samudragupta, and that inscription वो किसने लिखा था? It was written by Harisena. Harisena. Who was Harisena? Harisena was the court poet. He was the court poet of Samudragupta. He was court poet of Samudragupta. और हरिसेन ने इस प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर what he wrote the military achievements of Samudragupta. तो एक पिलर है जिसके ऊपर पीस की बातें लिखी हुई है. On the same pillar, some other person comes and like he writes the things of expansion. Same pillar. So can we say this thing? The policy of Ashok ended with Ashok. The policy of Ashok ended with Ashok. Can we say this thing?
तो इफ ऐसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो वी मस्ट बी इन अ सिचुएशन, एंड ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू से बहुत पूछते हैं. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एंड वी कैन आंसर देयर. हालांकि आंसर कोई मैटर नहीं है इंटरव्यूज में. इफ यू आर नॉट आंसरिंग एनीथिंग इन इंटरव्यूज, इट डज नॉट मीन दैट योर मार्क्स बी डिडक्टेड. नो, दैट डज नॉट मीन. इट ऑल लाइक इट इज ओनली हाउ यू आर आंसरिंग. आप आंसर कैसे कर रहे हो, व्हाट इज द वे ऑफ योर सेइंग नो. अगर आपको आंसर आता भी नहीं है तो आपने नो कैसे बोला, है ना, डर के बोला, पसीने पसीने हो गए, या क्या हुआ, what happened to you. So it is like that thing is more important. वो चीज ज्यादा important है, बट ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है. ओके, सो प्लीज लाइक अपना माइंड बड़ा इसी हिसाब से करना. एंड इफ देयर इज अ पर्सन हु नोज दिस थिंग एंड हु इज यूजिंग इट वेरी क्लासिकली, वेरी बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज करके पूरा का पूरा बोला आंसर को, तब देखना उसके मार्क्स. So many questions from ancient India. So many questions from ancient India in interviews. So many questions. And अगर direct question नहीं भी है, you can use ancient India. मैंने आपको पहले ही बताया था ना, example of environmental degradation. I hope you remember that. है ना, मेरे ख्याल से आपको याद होगा. Paramita, very good, है ना. You can use ancient India. Like it can help you a lot. तो ancient को कभी छोड़ना मत. That is my advice. Never leave ancient, never skip ancient. Okay, so Allahabad pillar, it was composed by Harisena. He was the court poet, and it was basically about the military achievements of Samudragupta. इस pillar पे पता क्या लिखा हरिसेन ने? हरिसेन ने लिखा Samudragupta defeated 9 kings of Ganga Valley. 9 kings of Ganga Valley. He defeated 12 kings of southern region. Third point, he wrote, he defeated 18 kings or 18 forest tribes. 18 forest tribes. Okay, 9 kings of Ganga Valley, 12 kings of southern region, and 18 forest tribes. Also, एक और चीज लिखी हुई थी, the empire of Samudragupta stretched from Himalayas in the north to Krishna Godavari, and from Afghanistan to Brahmaputra river. This inscription, Allahabad inscription, it is written in classical Sanskrit. Classical Sanskrit में inscription लिखा हुआ है, classical Sanskrit, and 33 lines have been written. Afghanistan to river Brahmaputra. 33 lines have been composed by Harisena. Chetra मैंने बोला, Himalayas in the north to Krishna Godavari in the south, and Afghanistan to Brahmaputra river. Done? Chaitra, Janvi, चले आगे. सबना, these are all are in that pillar. हाँ, उस पिलर में लिखा हुआ है हरिसेन ने 33 लाइंस लिखी है हरिसेन ने बताया किस किस को हराया और what was the empire. And the inscription is written in classical Sanskrit in the Nagari script or Nagari script. Nagari script. ठीक है. वैसे Samudragupta himself was also a poet. Samudragupta himself was also a poet. He was himself a scholar. वो अपने आप में एक poet था, scholar था. But ये question आ सकता है, मतलब this option can be Samudragupta himself, but the answer will be Harisena. ठीक है? यहाँ तक सबको ठीक है? Things are clear. This man Samudragupta, he's called as Napoleon of India. He's called as Napoleon of India. Chaitra, 33 lines. He's called as Napoleon of India. And who was the person who has called him Napoleon of India?
The person was art historian A.V. Smith. A.V. Smith. He is called Napoleon of India by A.V. Smith. ठीक है, A.V. Smith ने क्या बोला समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया. Do you support A.V. Smith? Do you support A.V. Smith? Yes, Naga, unmute. Sir, it should be otherwise, sir. It should be other way. क्यों, कैसे, क्या, कौन सा भी होना चाहिए? Sir, Napoleon should be called the Samudragupta of France. He should be called as समुद्रगुप्त of France. बिल्कुल सही बात है, समुद्रगुप्त of France बोलना चाहिए. और हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं और हमारी बुक्स में क्यों लिखा हुआ होता है पता नहीं. सारी बुक्स में लिखा मिलेगा आपको, समुद्रगुप्त is called as Napoleon of India. In every book you will find we ourselves accept all these things. We ourselves accept all these things. है ना. और एग्जाम में पूछ लेंगे which ruler was called as Napoleon of India, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, है ना. एग्जाम में भी तो पूछ लेंगे, अब क्या करें, किसको सुधारें. सो हमें पढ़ना ही पड़ेगा. ओके, समुद्रगुप्त को देख लेते हैं. If we have like covered everything about him, he was the son of Chandragupta I and Kumara Devi, Lichavi Devi, Kumara Devi, and he was a military genius. Allahabad inscription, we have seen this. He was a follower of Vaishnavite Hinduism. Vaishnavite Hinduism was tolerant towards other faith. He was called Indian Napoleon by Vincent Smith. Performed Ashwamedha sacrifice. One of his coin refers to him as a restorer of Ashwamedha. Restorer of Ashwamedha. He was also called as Kaviraj. Kaviraj. So now ये पेपर में आ सकता है. Which king was also called as Kaviraj? So it was Samudragupta I. समुद्रगुप्त को बोलते थे कविराज, since he also composed verses. अब देखते हैं next person. So basically this is the map. ये मैं मैप को थोड़ी देर में दिखाता हूँ. एक बार चंद्रगुप्त II को भी देख लेते हैं पहले. So Chandragupta II, he was the son of Samudragupta, and he made use of you can say judicious combination of policy of diplomacy and warfare. Actually हुआ क्या? He was having a daughter. The name of the daughter was Kuber Naga. The name of the daughter was Prabhavati. The name of the daughter was Prabhavati. And Prabhavati was married to a Vakataka prince, Rudrasena. Now see this map. Can you see this area? Bluish. This was the Vakataka empire. ये था Vakataka region. तो क्या किया चंद्रगुप्त II ने? चंद्रगुप्त II married his daughter Prabhavati to the Vakataka prince. Vakataka prince के साथ शादी कर दी. This man was Brahmin, by the way. This man was Brahmin. And होनी को कौन टाल सकता है? तो Vakataka prince died. When Vakataka prince died, he was having a minor son. Mother कौन है? Who is the mother? Mother is Prabhavati. Who is Prabhavati? Prabhavati is daughter of C2, Chandragupta II. है ना? Prabhavati कौन थी? She was daughter of Chandragupta II. So basically Prabhavati ruled as a regent. Prabhavati ruled as a regent for her son. And Prabhavati actually किसके लिए काम करेगी? Prabhavati? For the interest of, like, whose interest? Janvi husband. अरे जानवी, कहाँ जानवी? अभी आपको पता नहीं है. आपकी जब एक बार शादी रहेगी तब भी आपको पता चलेगा. Like a daughter is most attached to her father. सबसे ज्यादा. And in fact a daughter wants her husband to be like her father. Every daughter wants her would-be husband must be like her father. ऐसे होता है, हमेशा ऐसे होता है ना? So basically आपने देखा वो जो sons होते हैं, they are more attached to mother और son का बड़ा attachment होता है. एक daughter का अपने पापा के साथ में बड़ा attachment होता है ना? So this daughter Prabhavati will be promoting interests of C2.
And actually, it will be the Chandragupta II. It will be Chandragupta II who will be administering this area indirectly. Indirectly, Vakataka kingdom कौन रूल करेगा? चंद्रगुप्त II. ठीक है? Got this point? ये बात समझ आ गई? Is this point clear? यहाँ तक सबको clear है? Please tell me. Sir, could you repeat Chandragupta II was whose son, like Samudragupta? हाँ जी, चंद्रगुप्त II was son of समुद्रगुप्त. और क्या? देखो स्टार्टिंग से देख लेते हैं हम एक बार. No confusion. जानवी शुरू से देखते हैं. It was श्रीगुप्त. श्रीगुप्त के बाद it was घटोत्कच. घटोत्कच के बाद it was, हम इसको C1 ले लेते हैं, चंद्रगुप्त I. रामगुप्तम छोड़ देते हैं. देवी चंद्रगुप्तम का विलन या फिर यू कैन से साइड हीरो, उसको छोड़ देते हैं. सो चंद्रगुप्त I. चंद्रगुप्त I का बेटा कौन था? इट वाज समुद्रगुप्त. एंड समुद्रगुप्त का बेटा कौन था? इट वाज C2. सो समुद्रगुप्त से पहले भी चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बाद भी चंद्रगुप्त. तो इन बिटवीन सैंडविच्ड इज समुद्रगुप्त. गेटिंग दिस पॉइंट? समुद्रगुप्त ने बेटे का वही नाम रखा जो उसके पापा का नाम था. ओके, सो प्रभावती इज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II. प्रभावती इज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II. ठीक है, अभी क्लियर है सबको? टिल हियर द थिंग्स आर क्लियर. चले आगे. Shall we proceed? Okay, so now चंद्रगुप्त II ने क्या किया? चंद्रगुप्त II एक्सटेंडेड फर्दर. अब वापस आते हैं इस मैप पर. Now can you see this map? This cyano green color, this bluish green color, this was the area, this is the empire of Chandragupta I. है ना, ये चंद्रगुप्त I का empire था. The orangish area was added by Samudragupta. The orangish empire was added by Samudragupta, while this green region, it was added by Chandragupta II. This region was added by Chandragupta II. What will be the most important thing of this region? What will happen when this region is with the Guptas? उन्हें क्या मिल गया? Guptas को क्या मिल जाएगा? Very good, Janvi and Shubhra. उन्हें मिल गया कोस्ट. उन्हें सब कुछ मिल गया जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था, है ना? जिसका बरसों से इंतजार था वो चीज मिल गई. उन्हें मिल गया कोस्ट, और कोस्ट मिल गया तो कोस्ट से वो लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड. ऐसा नहीं था कि पहले ट्रेड नहीं हो रही थी फॉरेनर्स के साथ में. इट वाज गोइंग ऑन फ्रॉम लाइक लैंड रूट. अभी सी रूट से भी हो सकती है. इन एडिशन टू लैंड रूट, सी रूट के साथ में भी ट्रेड. ओके, दिस रीजन, ये रीजन था किसके पास? किसको हराया चंद्रगुप्त II ने? यस, किसके पास था? वेरी गुड जानवी. ये तो वेस्टर्न सट्रैप्स थे. दिस रीजन वाज द वेस्टर्न सट्रैप्स. दिस वाज वेस्टर्न सट्रैप्स ऑफ शाकास. So Shakas, western satraps of Shakas, they were defeated by Chandragupta II. Chandragupta II ने इनको हरा दिया. And like took control over the western sea coast. और उसके बाद this region became very important for trade. Very, very important. Got it? Chandragupta II also established a second capital. The second capital was Ujjain. It was established by Chandragupta II, and Chandragupta II adopted the title called as Vikramaditya. याद है who was the first Vikramaditya? कौन बता सकता है मुझे? Please unmute and tell me who was the first Vikramaditya. Anyone, please. Open question to all. Who was the person who had taken this title of Vikramaditya? Shubhra, Sabna, Mega, Kanchi, Janvi, Damini, Sindhuja, Chaitra, and Avine. Who was the person who had taken this title, Vikramaditya? Anyone? Shubhra, unmute. Shubhra, अभी तो मेरे ख्याल से it is not the lunch time. अभी तो
है ना? अभी अभी लंच के साथ क्लैश तो नहीं करती क्लास? अभी तो क्लैश? यस यस शुभ्रा, अभी ठीक है? अभी परफेक्ट टाइमिंग है? Yes, sir. चलो ठीक है, शुभ्रा बताओ, हु वाज विक्रमादित्य? Sir, basically, Shakas, like, apart from Indo-Greeks, they faced no resistance rulers, but they faced resistance from the king of Ujjain, and his name was Vikramaditya. And that's why it became a coveted title too. His name was not Vikramaditya. Vikramaditya was the title he took. हमें तो नाम भी नहीं पता नाम क्या था उसका. It was a title. Yeah, It was a title he took. yeah, है ना title शुभ्रा? he took. So basically क्यों लिया था विक्रमादित्य? Because he had defeated he had defeated Shakas. 57 Yes. BC. 57 BC 57 And- विक्रम संवत भी शुरू हुआ था यहाँ से. याद है Yeah, आपको? विक्रम संवत Vikram Samvat. based on that lunar month and sidereal years, time taken to orbit, Yes, sir. like orbit the sun with respect to the position of stars. अगर आपको याद हो, मैंने Yes, बताया sir. होगा आपकी sidereal years. तो Yes, sir. उस टाइम पर भी there was a king like who had defeated Shakas in the year 57 BC. Now another Indian king has defeated Shakas. पहले वाले को बोलते थे सकारी, शाकास को हराने वाला सकारी, साकास को भगाने वाला. इस बार बोला गया, चंद्रगुप्त को बोला गया द बिगर सकारी, द हंटर ऑफ द पर्सन हु हंट्स शाकास, बिगर सकारी. कांची क्या नहीं पता था? वी डोंट नो व्हाट वाज the हिज name of that king of Ujjain. उसका ना, उसका टाइटल विक्रमादित्य था. वी डोंट नो हाँ, द नेम नेम, नहीं पता था ना. Yeah, नाम नहीं yeah, पता sir. था. That's why I was replying जानवी that. ओके ये अच्छा, ये आप जो ऐसे करते हैं इसका मतलब है कि ये बाकी का आप ऊपर से ले लो, इसका ये मतलब है. अरे बाप रे, इतना ध्यान देना पड़ता है, इतने छोटे छोटे चैट दिखती है मुझे, पता है. बूढ़े आदमी से क्या क्या करा रहे हो आप. चलो ठीक है, चलते हैं आगे. तो आपको पता चल गया द एक्सटेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर नाउ, एंड नाउ यू आल्सो नो C1 Chandragupta 1, you also know about Samudragupta, you also know about Chandragupta 2. Chandragupta 2 was called as the bigger Shakari. ठीक है? This man Chandragupta 2, इसने क्या किया? He crossed river Sindh, है ना? He also crossed river Sindh. river Sindh को भी क्रॉस किया, रिवर सिंध को भी क्रॉस किया, और जो बच्चे कुछ यहाँ पे कुशांस थे सबको सबड्यू कर दिया. जो बच्चे कुछ कुशांस थे सबको सबड्यू कर दिया. किसने? चंद्रगुप्त 2 ने. सो कुशांस किस फ्यूडेटरी हुआ करते थे? गुप्ताज. और अभी स्थिति क्या आ गई है? कैन यू सी टाइम चेंजेस? कैन यू सी हाउ टाइम चेंजेस? गुप्ताज वर, मैंने ये बताया ना आपको, गुप्ताज वर फ्यूडेटरीज ऑफ कुशांस. ये तो कुशांस के फ्यूडेटरी थे. एंड नाउ व्हाट C2 इज डूइंग, जो बचे कुछ कुशांस भी थे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, उनको भी खत्म कर दिया. बोलो यू नीड टू पे ट्रिब्यूट टू अस. आपको ट्रिब्यूट हमें देना पड़ेगा, है ना? आप ट्रिब्यूट हमें देना पड़ेगा. बट फिर भी दिस वॉर इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट मिलिट्री अचीवमेंट. इसको ग्रेटेस्ट मिलिट्री अचीवमेंट बोलते हैं. किसका? चंद्रगुप्त 2 का. व्हेन ही defeated Shakas. Who was the king of Shakas at that time? The king was Rudrasimha III. Rudrasimha III was killed in this war, and all the territories were annexed into the Gupta Empire. और उसके बाद चंद्रगुप्त ने क्या करा? Horse sacrifice and assumed the title of Shakari. And called himself Vikramaditya. ठीक है? और क्या मिल गया? अभी बताया मैंने आपको, ट्रेड मिल गई. Sir, यस सपना. Chandragupta II crossed the river Sindh and defeated Kushans. And Pardon, सपना.
Chandragupta II crossed the river Sindh and defeated Kushans. Okay, and which war is considered as greatest military achievement with Shagas? ये वाला Shakas वाला, the defeat of, like when he defeated Rudrasimha III, who was the Shaka ruler. This is considered as greatest achievement क्योंकि coast मिल गया ना. Okay, okay, sir. है ना, because of the coast. Okay. Okay, so Chandragupta II के टाइम में और कुछ भी हुआ. During the period of Chandragupta II, Chandragupta Vikramaditya. Chandragupta II को बोलते हैं Chandragupta Vikramaditya. So during the period of Chandragupta II, one traveler came from China. His name was Fayan. His name was Fayan. Give me a minute, मैं निकाल लेता हूँ Fayan को. Yes, this is Fayan. ठीक है. Fayan visited during the reign of Chandragupta Vikramaditya. Now, why he came to India? He came to India to see the land of Buddha. उस टाइम पे चाइना में ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म हो रही थी. एवरीथिंग वाज लाइक गोइंग बुद्ध में, है ना. हर चीज बुद्ध में हो रही थी. लाइक देयर इज वन ऑफ माय नेबर शी इज लाइक, एक आंटी है, तो शी इज अ वेरी बिग फॉलोवर ऑफ वन गुरु. The name of the guru is very popular. Every one of you must be knowing him. The name is Asaram Bapu. So she is a very big follower of Asaram Bapu. So whenever we enter the home of that auntie, मेरे बस बिल्कुल ये जो साइड वाली वॉल है, इसके बिल्कुल नेक्स्ट बगल वाला घर is of that auntie. So whenever we are going to the like place of auntie, उनके घर जाने के बाद एक चीज लगता है, पूरा का पूरा घर आसाराम में हो चुका है. Asaram Bapu is present everywhere in the house. Now, why I am saying that Asaram is present everywhere in the house? If there is anyone follower of Asaram in the class, please, like, with all due respect to everyone's feelings, but he's a con, not a guru. Okay, that's a different thing. So Asaram Bapu, like पूरा घर Asaram Bapu हो रहा है. Asaram Bapu के इतने बड़े-बड़े फोटो, इतनी बड़ी-बड़ी तस्वीरें in the drawing room, in the kitchen, in the जो क्या बोलते हैं बीच का, there is a place, open space होता है, veranda, and you will not believe in the toilet bathrooms. Seriously, you will not believe in the toilet bathrooms. Toilet as well as bathroom, different toilet and bathroom दो हैं, और दोनों के अंदर there are pics. So ऐसा लगता है कि everything is like Asaram Bapu is present everywhere. तो ऐसा ही लग रहा था फायान को भी. ऐसे लग रहा था फायान को भी ऐसे लग रहा था कि जब मैं इंडिया जाऊंगा, when I'll be going to the land of Buddha, everywhere I'll see like बुद्धा ही बुद्धा दिखेगा मुझे, है ना. But to his surprise कि ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है ना, थोड़ा सा शॉक लगा होगा. This man must have felt shocked. थोड़ा सा तो शॉक लगेगा. इससे ज्यादा शॉक इसके बाद वाले को लगेगा, वो इंसान जो हर्षा के टाइम पे आएगा, उसको ज्यादा शॉक लगेगा. So when this man came, Fayan came to see the land of Buddha. Basically, his aim was to collect Buddhist manuscripts. जितना भी literature है उसको लेना है. So do you think that Indians will be giving कि लीजिए आप ले लीजिए Buddhist manuscripts? Do you think Indians will be giving the manuscripts to Fayan? No. तो क्या करना पड़ेगा Fayan को करना पड़ेगा Xerox, है ना. So Fayan needs a Xerox. But the problem is there is no Xerox machine. There is like कोई carbon paper भी नहीं है. क्या किया जाए? How to copy? Shubhra, how to copy? You need to write. That means उसको लंबे टाइम तक इंडिया में रहना पड़ेगा. So he was in India for 9 long years. 9 years. He was in India for 9 years. He had started his voyage in the year 399 AD. 399 AD and reached in 400 AD. 400 AD. Okay, so this is the route of Fayan. Can you see the route of Fayan? ये मैप में क्यों दिखा रहा हूँ आपको? Because there was once I had seen a question. Fayan took land route. For incoming as well as outgoing. Can you see now? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस मैप से आराम से मिल जाएगा
He came via land route. He came via land route, but he went using a sea route. He went using a sea route. So remember this map. ये मैप जिसे जिसे याद रह गया उसको इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा के लिए याद रहेगा. Okay, so basically he started his voyage in the year 399 AD and reached 400 AD. 400 AD. ठीक है, और वापस से 411 AD में पहुंचा चाइना. Reached back in 411. So he came to India using a land route. Using land route, he came to India using a land route. Using land route, and went back using the sea route. Up, he visited which places? Ab kaun si places visit kari? Basically, in this map, there are some places mentioned. The places are: he visited Peshawar while coming to India. Peshawar, Mathura. You can mark here. Peshawar, Mathura, Kannauj, Shravasti, Kapilvastu, Kushinagar, Patliputra, Kashi, Bodh Gaya. So all the religious places of like Buddhism, all the important places of Buddhism were visited by this man. And what was the purpose of the visit? What was the purpose of visit, Chaitra? Chaitra, unmute. अरे Chaitra, Yes, कभी sir. कभी तो unmute हो जाया करो. Yes, Chaitra. Absolutely. Yes, Chaitra. What was the purpose of his visit? For Buddhist manuscripts and to explore the Buddhist areas. To see the land of Buddha and to collect the Buddhist manuscripts from it. Okay, Chaitra. Chaitra, you had your lunch? Yes, sir. पक्का श्योर? क्या खाया था लंच में आज? चावल. चावल, ओनली चावल, ऐसे ही बगैर बगैर किसी सब्जी या दाल के साथ, ऐसे कैसे? नहीं सब्जी, भिंडी का सब्जी. भिंडी की सब्जी के साथ चावल तो अच्छे से नहीं खाया. आपकी आवाज नहीं निकल रही चैत्रा. यू आर लाइक बहुत लो फील कर रहे हो. व्हाट हैपेंड? Nothing, sir. Exam tomorrow, sir. हाँ, Exam tomorrow, sir. ओ किस चीज का? योर लॉ एग्जाम? Yeah, semester exam, sir. I have my सेमेस्टर exams एग्जाम्स. till 18th. अरे तो कोई बात नहीं. अच्छा, यू आर बेसिकली यू आर लाइक कंजर्विंग योर एनर्जी. एनर्जी कंजर्व्ड इज एनर्जी क्रिएटेड, यू नो दैट. कोई सा तो लो था ना एक ये. ओ माय गॉड. अच्छा ठीक है चैत्र. Okay. Okay. So this man, Fayan provides information on religious and socio-economic conditions of the then India. That means of the Gupta age, of the Gupta Empire. हमें कैसे, ये एक बहुत बढ़िया सोर्स है कि he provides information on religious and socio-economic conditions of Gupta Empire. According to this man, Fayan के हिसाब से बुद्धिज्म का क्या हालचाल था? According to this man, Buddhism was in flourishing condition. In the northwest India, but in the Gangetic Valley, it was in the state of neglect. So this region, it was state of neglect, and this region, it was flourishing.
flourishing condition in northwestern India, and in the Gangetic Valley, it was in the state of neglect. According to this man, Gangetic Valley उस समय land of Brahmanism बन चुकी थी. It had became a land of Brahmanism. It had become land of Brahmanism. Abhinay, you want to ask something? Yes, sir. So basically, both the Northwest and the Gangetic Plains both were under the Gupta Empire only, right, sir? Okay. So there wasn't basically. So was there any particular religion that the Gupta like preached or They made? were Vaishnavites. They were Vaishnavites, but tolerant to other religions. They were Vaishnavites, but were tolerant to other religions. ऐसा नहीं था कि आज के टाइम के जैसा है ना, मटन के चक्कर में किसी को मार देंगे, ऐसा नहीं था. I just got confused because in the same empire only, it's like two different places under the same Yes. empire, two different religions बिल्कुल. are. पता है ऐसा क्यों? अभिनय, why? What should be the reason? The reason should be like here, like it is a seat of power. It is a seat of power, है ना? It is a seat of power. So more influence of ruler on the janta, on the people. These regions are like far away. ये regions दूर है ना? समझ रहे हो ना अभिनय? And पुराने जमाने में यहाँ पे कौन सा religion हुआ करता था? It was Buddhism. So अभी तक Buddhism यहाँ पर ठीक ठाक था. But here it was in a state of neglect. Got it. Got it? Yes. He also mentions, Fayan also mentions the unsatisfactory state of some Buddhist holy places like Kapilvastu and Kushinagar. बोला कपिलवस्तु और कुशीनगर की तो बड़ा अनसेटिस्फैक्टरी. नहीं भाई, मजा नहीं आया. सोच के तो क्या गए थे, लेकिन अच्छा नहीं था. हालांकि दिस मैन सेज द इकोनॉमिक कंडीशन was prosperous. Economic condition was prosperous, but nowhere he uses the name of the ruler C2 or Chandragupta Vikramaditya. Chandragupta Vikramaditya कहीं पर भी नाम नहीं लिया because he was not interested in political affairs. He was not interested, not at all. इससे दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं है ना. न्यूज चैनल नहीं देखना आजकल, something like that. He was not interested in political affairs. He was something. जिसके बाद में एक और आएगा हर्षा के टाइम पे, there will be one more Chinese traveler, Huyen Sang. Huyen Sang will be the guest of the king. Huyen Sang will be the guest of the king. Harshavardhan will be patronizing him. Harshavardhan will be patronizing Huyen Sang. So H से हर्षवर्धन and H से Huyen Sang. Confuse, याद रखना, ये चेंज मत कर देना, ठीक है. H से Huyen Sang and H से हर्षवर्धन. H एक साथ आए थे. Huyen Sang came in the period of Harshavardhan, and Fayan आ जाएगा दूसरे क्यों जो बचा हुआ है, यानी Gupta और Chandragupta II. ठीक है. Please remember this thing. So he was not interested in political affairs. His interest was purely and purely religion. His interest was religion. ये interest था उसका. Like he was looking each and everything. He had worn goggles. He had worn specs of Buddhism. उस चश्मे को लगाने के बाद में everything was appearing to him like from Buddhist angle. He assessed everything from Buddhist angle. हर चीज को Buddhist angle से देखा था. किसने? फायान ने. But still the accounts of this man are useful for general conditions of the country. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? विजिट ऑफ फायान, दिस विजिट ऑफ फायान क्लियर टू ऑल? ओके, वन मोर थिंग, मैं एक चीज थोड़ा सा इसको डिटेल में चलते हैं. when this area, the western area, the western coast, when this area came to Guptas, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? What happened? तो western boundary मिल गई, like मिल गया coast. Because of coast, trade with the west. और ट्रेड किस चीज की हो रही थी? प्लीज नोट इट डाउन. ट्रेड किस चीज की हो रही थी? नंबर 1, कॉटन क्लोथ फ्रॉम बंगाल.
Number 2, indigo from Bihar. Indigo from Bihar. Silk from Banaras. Silk from Banaras. Perfumes from Himalayas. Sandal. सैंडल, मृगांक की वो वाला सैंडल नहीं है जो जिससे डरते हैं सब लोग, ये सैंडल वाला है, मैसूर सैंडल, चंदन. ओके, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. पता चल रहा है डर जाओ कि ये कौन सा सैंडल आ गया, कि लेडीज सैंडल इतनी मशहूर होती थी, लेडीज सैंडल की बात नहीं हो रही मृगांक, बट इज लाइक सैंडल, सैंडलवुड. सो सैंडल एंड स्पाइसेस, सैंडल एंड स्पाइसेस फ्रॉम साउथ, फ्रॉम साउथ. सबना, रिच. व्हाट इज दिस रिच? कौन है रिच? किसके लिए बोल रहे हो सबना? ट्रेड. या इट वाज अ रिच ट्रेड, यही तो मुझे बताना था. I want to come like this was my conclusion. It was a very nice trade. It was a very nice trade, and all these things were going where? All these things were going to Roman areas, to Roman Empire. और रोमन्स तो हर चीज का किस चीज में लेते थे, लाइक बदले में क्या देते थे रोमन्स? What they were giving? Gold. They were giving gold. So basically, during the time of Chandragupta Vikramaditya, a huge varieties of gold coins were issued. A huge varieties of gold coins were issued during the period of Chandragupta Vikramaditya. Now you have the reason why. What was the reason why expansion ज़्यादा किया था समुद्रगुप्त ने? Samudragupta had expanded more than Chandragupta Vikramaditya, but still more number of gold coins, more variety of gold coins issued by Chandragupta Vikramaditya. Got it? Clear this point? This thing is clear to all? Okay, Sindhuja, unmute. Yes, Professor. Sindhuja, can you tell me like why more variety of coins during the period of Chandragupta II? Sindhuja. Because the trade increased and there was like a variety of products of trade to the Roman Empire. Okay. That's what I think. Okay, so because the reason was basically the Roman trade, and Roman trade क्यों कर पा रहे थे इतनी बढ़िया, इतनी ज़्यादा Roman trade क्यों हो रही थी? The reason was because of the West Coast. They were having the West Coast. They were having West Coast. So this was the reason they were like able to do like Roman trade. Roman trade कर पाए थे, Roman से Roman gold मिल रहा था, and it was the reason why Chandragupta Vikramaditya issued a huge number of like a huge variety of gold coins. Okay, I guess this point is clear to all. Sir, now what? Yes, Abna? What we mean by this variety? Different sizes? Okay, एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ वैरायटी आपको अगर मेरे पास है. अरे वैरायटी कहाँ गई? Give me a minute, please. Just see the coins of Guptas. Can you see different coins? अब देखो सबना, different coins of Guptas. Okay, प्योरिटी भी अच्छी खासी थी. कॉइन्स इतने टाइप के होते थे, देखो समुद्रगुप्त के कॉइन्स देखो, स्टैंडर्ड टाइप, आर्चर टाइप, बैटल एक्स टाइप, लिच्छवी टाइप, so many types, कच्चा टाइप, टाइगर स्लेयर टाइप, लिरिस्ट टाइप, अश्वमेध टाइप, so many different kinds of coins were there during the period. My doubt is why, how this varieties, or what was the purpose of this variety? Just for issuing this variety. उसके ऊपर ये बनाएंगे ना कुछ जो to propagate the kingdom. उसके हिसाब से वैरायटी. Okay. Okay, सब ना?
Yes. Was it like different products could be purchased only with like a particular coin or something? No. Or were the values different? Nothing. It was something कि जो king होता है, king को अच्छा लग रहा है कि कुछ coins ऐसे होने चाहिए, कुछ coins ऐसे होने चाहिए. So it shows the king is huge. It shows the effect of king, effect of that king. कि मेरे पास इतने type के kings हैं. Yes, Induja, value भी उनकी similar होती थी. Okay, after that, Chandragupta II के बाद, what happened? When Chandragupta II was succeeded by Kumar Gupta, so he succeeded Chandragupta, Vikramaditya, Kumar Gupta. When he took over, this man, Kumar Gupta, he was the successor of Chandragupta. When he came, there was peace and prosperity in the kingdom. Peace and prosperity in the kingdom. Okay, he issued a huge number of coins. खूब सारे coins भी issue करे. He issued a huge number of coins which are found all over the Gupta Empire. He also performed Ashwamedha sacrifice. ठीक है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए सबको. He founded Nalanda University. It was a university of international reputation. लोग आते थे दूर से पढ़ने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में. उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी में there was an exam that was conducted. एक एग्जाम होता था and like everything was free of cost. It was a residential university and everything was free of cost. सब कुछ free of cost. तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा कैसे आता? Like कुछ गांव का revenue of some villages was kept aside for this Nalanda University, and to click that exam was very difficult. Okay, but Nalanda University was founded by Kumar Gupta. But हुआ क्या? Every good thing has an end. So what happened during the time? Central Asia से हुए attacks. There were attacks from Central Asia. The people who were attacking were called as Huns. Sabna, who was teaching there? Sabna, they were professors. Like mostly, सारे subjects होते थे इसके अंदर. मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा डिटेल में when we are doing Harshavardhan. But like Buddhism, Hinduism, Jainism, सब चीज की पढ़ाई होती थी यहाँ पे. Mahayanism, Vajrayana, everything. ठीक है. So Central Asia, there were some people called as Huns. Huns invaded this area, and Kumar Gupta ने पुरजोर कोशिश करी कि they are not able to come to the like in the kingdom. Kumar Gupta का जो successor था Skand Gupta, he also fought successfully. But हुआ क्या? When Kumar Gupta and Skand Gupta were doing this thing, when Kumar Gupta and Skand Gupta were fighting with Huns, इनको रोकने के लिए, there was strain on resources. सारा पैसा खर्च हो गया. पूरा का पूरा पैसा ही खर्च हो गया. And अभी स्कंद गुप्त के जो successors आएंगे, they were weak. स्कंद गुप्त के successors, they were very weak. पुरु गुप्त, नरसिम्हा गुप्त, कल मैं दोबारा से एक बार नाम लिखा दूंगा आपको. ठीक है, they were weak. So क्या होगा? What will happen? Guptas khatam. End of Guptas. There will be end of Guptas. So tomorrow I will be telling you the decline of Guptas. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास. एडमिनिस्ट्रेशन में हम सोशल लाइफ, ये सब हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर ऑफ गुप्तास. So tomorrow we'll be doing this thing. Okay, so thank you. Bye. Yes, Samran Kanchi, one by one. Kanchi bolo. Skand Gupta was son of that Kumar Gupta. Yes.
Okay. And sir, have you checked my answers? Have you checked it? नहीं कांची, मुझे टाइम नहीं मिला था. Yesterday my mom got operated, like she was having a surgery, so I was really very busy there. Okay, no Okay, issues, so sir. You can check it later. I could not check any mail, Shubhra, or any answer. I hope you understand. So give me some time, and you'll get back your answers very soon. Okay, bye bye. Have a great day. Sir, Yeah. I have one Sorry, more doubt. sorry, Sabna. Yes, Sabna. Last class, when the end of Sangam match was discussed, you were told that Pandyas and Pallavas drove the Kalbras out of the Tamil Nadu region. So my doubt is that in post Sangam age, Kalbras were there, and after again Pandyas came. Yes, Pandyas दोबारा आएंगे. अभी मैं बताऊंगा आपको जब हम बाद में करेंगे तो. Like Cholas only. हाँ, like Cholas only. Okay, sir. Okay. Yeah. Okay. Bye bye.